Hello viewers, today I am going to discuss a very important topic of coordination chemistry, crystal field theory. In short, it is known as CFT. CFT was proposed by Brithy and Van Black. It was originally applied for crystalline, ionic crystalline solid. Orgel applied CFT crystal field theory to coordination compound and provided description about electronic energy level in complex. According to crystal field theory, anionic ligands are considered to be negative point charge and neutral ligands are considered to be negative point dipole. And metal ion is considered to be negative positive point charge. The interaction between metal ion ligand is purely electrostatic. In this figure, a positive charged metal ion is surrounded by negatively charged ligands, and this cation, metal cation, is surrounded by negative pole of ligands. The interaction between metal ion and ligands is purely electrostatic in nature. Now, the interaction between electrons of metal ion and ligand, both are negatively charged, so it is repulsive in nature. Due to negative field generated by ligand, that is ligand field around metal ion, 5 d orbitals of metal ion are split into 2 or more energy levels. It is called crystal field splitting of d orbitals. रिपल्सन के कारण एनर्जी का इंक्रीज होना है, तो जिस डी ऑर्बिटल का रिपल्सन ज्यादा होगा उसके एनर्जी का इंक्रीज ज्यादा होगा, जहां रिपल्सन कम होगा वहां एनर्जी का इंक्रीज कम होगा. सो 5 डी ऑर्बिटल्स split into 2 or more energy levels. The energy difference between d orbitals of metal ion of maximum and minimum energy in complex is called crystal field splitting energy and denoted by delta. Here 5d हम लोग अब now discuss कर रहे हैं splitting of d orbitals in octahedral and square planar complex. 5d orbitals denote किया गया है dx square y square, lobes are along x and y axis, dz square, 2 lobes along z axis and a concentric ring is in xy plane, dxy lobes in x and in between x and y axis, dxz lobes are in between x and z axis, dyz lobes are in between y and z axis. This is octahedral complex where 3 pairs or 6 ligands are approaching to the metal ion along x, y and z axis. This is a square planar complex. It can be obtained by removing 2 ligands of octahedral complex along z axis. So after removal of 2 ligands along z axis, the rest 4 ligands in x and y axis or xy plane comes closer to the metal ion in a square planar complex. Now, a splitting of d orbital दिखा रहा हूं. These are 5 d orbitals of metal ion, 3 metal ion. The degenerates in equal energy. Second condition हम लोग ले रहे हैं where ligand field is assumed to be spherically symmetrical. मतलब all d orbital, all electrons in d orbital experience same energy with repulsive force. इसलिए सबकी एनर्जी बढ़ी है इक्वल अमाउंट में. डिजेनरेसी अभी मेंटेन है. अब आ रहे हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, जहां 3 pairs of ligands are approaching to the metal ion along x, y and z axis. So 2 d orbitals dx square and y square with lobes are along the axis experience a stronger repulsion than rest 3 d orbitals dxy, dxz and dy with lobes are in between the axis. So dx square y square की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और इन तीनों की एनर्जी कम रहेगी.
This is called crystal field splitting of d orbitals in octahedral complex. Energy difference between this level is called T2G and this level is called EG. The energy difference between T2G and EG level is called delta O for octahedral. बॉडी सेंटर मतलब एवरेज एनर्जी सेंटर है, ये एवरेज एनर्जी का लाइन है। दो डी ऑर्बिटल इससे ज्यादा है जिनकी एनर्जी 0.6 डेल्टा ओ है, और तीन एनर्जी कम है तो -0.4 डेल्टा ओ। अब हम लोग आ रहे हैं स्क्वायर प्रेशर कॉम्प्लेक्स में। जब देखा आपने कि 2 ligands along z axis are removed and rest 4 ligands along x and y axis come closer to the metal line. As a result of this, ligand field along x and y axis and in xy plane becomes stronger, and ligand field along z axis and xz and yz plane become weaker than octahedral complex. So, energy of dx square y square further rises and dz square decreases. और T2G लेवल से dxy की एनर्जी इंक्रीज हुई और dxz और dyz की एनर्जी डिक्रीज हुई। ये 4 एनर्जी लेवल हो गया। एनर्जी डिफरेंस को हम डेल्टा xp बोल रहे हैं स्क्वायर प्रेशर कॉम्प्लेक्स। Now splitting of d orbitals in tetrahedral complex. This is tetrahedral geometry where 4 ligands are approaching to the metal ion in between x, y and z axis. ये तो सेम टू ऑक्टाहेड्रल है यहां तक, हाइपोथेटिकल तक। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखते हैं कि जिनका लोब इन बिटवीन द एक्सिस है dxy, dxz एंड dyz, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, या dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड z स्क्वायर की एनर्जी कम रहेगी। ये dxy, dxz एंड dyz है, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर है। ये T2 बोलते हैं और E बोलते हैं। बॉडी सेंटर ये हुआ, एनर्जी डिफरेंस को डेल्टा टी कह रहे हैं। 3 ऑर्बिटल है ऊपर, एनर्जी 0.4 डेल्टा टी हुआ, और 3 नीचे है तो 2 नीचे है तो -0.6 डेल्टा टी। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। फर्स्ट, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, डेल्टा एसपी splitting for square greater than delta O than delta T. Delta is 0.3 times of delta O and delta T is 4.9 of delta O. Nature of metal ion. First, greater charge on cation results greater value of crystal field splitting energy. Iron 2 plus and iron 3 plus. Cobalt 3 plus. So, both have same number of electrons. 3d6 सब कुछ सेम है, लिगेंड सेम है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटस सेम है, केवल चार्ज का डिफरेंस है। जहां चार्ज ज्यादा होगा वहां क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। उसके बाद आइए डेल्टा, ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब सेल रिजल्ट स्मॉलर वैल्यू ऑफ डेल्टा हो। चार्ज इस फर्क सेम है, यहाँ d5 है, d6 है, तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहां एनर्जी कम हो जाएगी। एंड लेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर, इंक्रीज इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट नंबर, इंक्रीज इन outermost orbit number of cation increases delta O by 40 to 50%. निकेल, प्लेडियम एंड प्लैटिनम सब कुछ सेम है, खाली आउटर मोस्ट 3d8 3 4 5, तो डेल्टा O इंक्रीज कर रहा है। नाउ नेचर ऑफ लिगेंड,
ligand forming pi bond with metal atom like COCN greater value of delta. Value of a crystal field splitting energy also depends on donor atoms, carbon greater than nitrogen, then oxygen, then halogen. On these facts, a series of ligands are prepared depending on crystal field splitting energy in increasing order. This is called a spectrochemical series. Now, distribution of electrons in 5d orbitals of metal ion. Here, weak field T2GeG, where delta O energy difference is less than pairing energy, or here T2GeG delta O greater than pairing energy. So first D1 T2G1 Eg0, D2 T2G2 Eg0, T2G3 Eg0, जो कि वीक फील्ड और दोनों में सेम होगा. अब T2G4 ध्यान दें, ये D4 की बात हो रही है. तो 3 इलेक्ट्रॉन तो आ गया यहाँ पहले T2G3 में 3 तक में. अब चौथा इलेक्ट्रॉन की दो पॉसिबिलिटी है कि वो Eg में जाए या T2G में पेयर बनाए. तो Eg में अगर आता है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी इंक्रीजेज बाय डेल्टा O, और T2G में रहता है तो एनर्जी इंक्रीजेज बाय पेयरिंग एनर्जी, P फॉर पेयरिंग एनर्जी. तो व्हेन डेल्टा O less than pairing energy, the electron prefers to go Eg level, that is weak field. मतलब T2G Eg1 हो गया, और in a strong field, delta O greater than pairing energy, so electron prefers to become paired in T2G level. तो D4 हो गया, यहाँ T2G3 Eg1, यहाँ हो गया T2G4 Eg0. D5 में T2G3 Eg2, यहाँ T2G5 Eg0. D6 T2G4, अब T2Eg भर चुका है, अब T2G में यहाँ पेयरिंग शुरू हो गया. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यही डिफरेंस है. स्ट्रॉन्ग फील्ड में पहले T2G पेयर करके भर लेगा तब Eg में आएगा, और वीक फील्ड में हुड्स रूल की तरह पहले के करके तब आएगा, तब पेयरिंग शुरू होगा. क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, the decrease in energy achieved by preferentially filling of electrons in lower lying d orbitals is called crystal field stabilization. मतलब स्प्लिटिंग का जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनके कारण जो एनर्जी का डिक्रीज होगा, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन. इट इज इक्वल टू मेटल आयन कॉन्फ़िगरेशन. अगर T2Gn और Egm है, T2G में इलेक्ट्रॉन है, Eg में, तो CFT 0.4n प्लस 0.6 प्लस नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन P 0.4 के 2.2 by 5 3/5 में लिख सकते हैं. वीक फील्ड में T2G00, T2G1 0.4 डेल्टा O, T2G2 0.8 डेल्टा O, T2G3 1.2 डेल्टा O, T2G3. Eg1, T2G3 Eg1 0.6 डेल्टा और T2G3 Eg2 का 0 हो जाएगा, T2G4 0.4, और एक पेयर बन रहा है. 5 में 2 पेयर बन रहा है. यहाँ सेम फार्मूला से आ रहा है, T2G2 4, T2G3 इज 1 में जो -4 -8 -1.2 T2G और -1.6 with 1 पेयरिंग एनर्जी. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. Magnetic property of complex mainly arises due to number of unpaired electrons in d subshell, mu equal to n into n plus 2. तो वीक फील्ड में D0, D10 और में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए म्यू 0 हो जाएगा, और ये डायमैग्नेटिक होगा. नदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, म्यू पैरामेट्रिक. स्ट्रॉन्ग फील्ड में
D0 एंड D6 में देखिए, D6 में T2 D6 D0, यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये D0 D6 D10 डायमैग्नेटिक होगा और बाकी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। टेट्राहेड्रल कंसिडरिंग मेटल आयन विथ D0 D10 कंपेयर डायमैग्नेटिक, रेस्ट आर पैरामैग्नेटिक। स्क्वायर प्लेनर में D8 डायमैग्नेटिक होगा, बाकी पैरामैग्नेटिक होगा। कलर ऑफ कंपाउंड, एक कलरलेस और व्हाइट सब्सटेंस reflects all 7 colors. All 7 colors. A black substance absorbs all 7 colors of visible rays. The colored substance absorbs a part of visible rays and reflects this part of visible rays. Color of the substance is color of reflected ray. जो reflected ray है वो आपकी आंख में आ रही है, this is called complementary color. The color of substance may rise due to following reason: DD transition, charge transfer and polarization. So colored substance absorbs photon of visible rays. So as a result of absorption of photon, electron in the system gets excited from lower energy level to higher energy level. So this varies of 3 types. DD transition. Transition metal ion in aqueous solution or coordination compounds are colored due to DD transition, which involves transfer of DD splitting of d orbitals पढ़ चुके हैं। कम कोऑर्डिनेशन में कंपाउंड में d orbital 2 और more एनर्जी लेवल्स में है। The electron of d orbitals of lower energy absorb a photon and gets excited to d orbitals of higher energy. This is called DD transition. Following conditions are necessary for DD transition. 2 conditions. Total number of unpaired electrons in system remains unchanged, and the speed of electrons remains unchanged during DD transition. So, इसको आप समझेंगे। पहले वीक फील्ड दिखा रहा हूं। D0 कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। D1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में भी T2 D2 D3 अलाउड है, D4 तक अलाउड है क्योंकि यहाँ एक वैकेंसी है। लेकिन D5 में अब DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो D0 D5 नो, D6 अपोजिट स्पिन वाला ये इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्साइट होकर आ सकता है। D7 D8 D9 यहां तक DD ट्रांजिशन अलाउड है, इससे कलर्ड होगा। अगेन D10 में कलरलेस हो जाएगा। D0 D5 D10 कलरलेस होगा एंड रेस्ट आर कलर्ड। नाउ स्ट्रॉन्ग फील्ड D1 कलर्ड, D2 कलर्ड, D3 कलर्ड। D4 में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्साइटेड टू अपन लेवल। D5 भी कलर्ड है, लेकिन D6 में अगर DD ट्रांजिशन करते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज कर जाएगा। D6 कलरलेस हो जाएगा। D7 अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठ के ऊपर आ सकता है, अपोजिट स्पिन में कलर्ड होगा। D8 कलर्ड होगा, D9 कलर्ड होगा, एक वैकेंसी है, बट D10 कलरलेस हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड का D0 D5 D10 कलरलेस है और वीक फील्ड का स्ट्रॉन्ग फील्ड का D0 D6 D10 कलर। स्क्वायर प्लेन D10 कॉन्फ़िगरेशन कलरलेस है और टेट्राहेड्रल D0 D5 D10 कलरलेस होगा। चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर इन्वॉल्व ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स में होगा। वहां DD ट्रांजिशन विदिन एन एटम absorbing photon. Some compound of transition metal having D0 configuration are colored due to charge transfer, which involves transfer of electrons from oxygen atom to metal atom, like MnO4 minus CrO4 to minus Cr2O4. Now polarization. Some ionic compounds are colored due to polarization, like AgBr और AgI में polarization of anion होगा, इसलिए कलर होता है येलो कलर का। Ag या पेंसिल कलरलेस होता
That's all. Thank you. This is very important topic. Subscribe this channel and press the bell icon for proper notification in proper